Hello guys, what's up? Hope you all are doing great in your life. Welcome back to Sankalp IAS. Today in this video we discuss about the ancient history. Okay, first we will look into the ancient history, prehistoric phase. Prehistoric phase क्या है? ठीक है, प्रीहिस्टोरिक फेज उसे कहते हैं जिसके पास रिटन एविडेंस नहीं हो, मतलब राइटिंग से पहले इवॉल्व हुआ हो. ओके, फॉर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, period before the invention of writing is called prehistoric phase. Okay, first हम लोग ये समझेंगे history, how it named history as history. Okay, then history, the word comes from the Greek word historia, which means inquiry और नॉलेज अक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो भी इंक्वायर नॉलेज अक्वायर किया गया है, दैट इज नोन एज हिस्ट्री. एंड द हिस्ट्री वर्ड हैज बीन comes from the Greek word historia. Okay. Prehistoric phase, protohistoric phase, and history. Okay. Okay. And prehistory is the period before the invention of writing is known as prehistory, generally represented by three stone age. Okay, जो पहले stone age, जो this is stone age. Okay, stone age or pasan kal, this is an example of prehistory period. Okay, and protohistory is the period between prehistory and prehistory and history. Okay, the period between the prehistory and history, okay, is known as protohistory. Okay, it has a civilization or culture, okay, which has not yet deciphered writing. Okay, इसमें तो हम लोग ये पढ़ा कि बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग. ओके, एंड प्रोटो हिस्ट्री में दिस इट हैज नॉट येट डेवलप राइटिंग बट मेंशन इन रिटन रिकॉर्ड्स. ओके, मेंशन इन रिटन रिकॉर्ड्स है. ओके, बट राइटिंग डेवलप नहीं हुआ था. राइटिंग डेवलप नहीं होने के बावजूद इट हैज रिटन एविडेंस. आफ्टर दैट कम हिस्ट्री, that is the post after the invention of writing and study of literate societies based on written and archaeological sources. Okay, which has, see, इसके पास archaeology and written evidence है. Proto history has written but writing were not developed. Okay, or not deciphered. Okay, or prehistory में before the invention of writing. Okay. Okay, now we came to the prehistoric phase. Okay, so based on geological age, this stone age, okay, हम लोग ने ऊपर देखा था prehistory का example, that is stone age, पाषाण काल, which were further divided into three categories, that is number one, old stone age or Paleolithic age. Okay, number two, late stone age or Mesolithic age. Okay, and number three is new stone age or Neolithic age. Okay, paleo, the word paleo means old. Okay, पुराना को paleo कहते हैं. and lithic means stone. Okay, मतलब okay. Now we will see how the culture of Paleolithic peoples were. Okay, Paleolithic के cultures क्या थे? So mostly the people of Paleolithic age were hunters and food gatherers. Okay, so mostly वो लोग depend करते थे शिकार पे. जो वो शिकार करेंगे वही वो खा पाएंगे, और इसी तरह शिकार कर करके घूम घूम के वो लोग खाना एक जगह करते थे, because they were not food producers. Okay, so they were basically hunters and food gatherers. Okay,
and this period where the in the period of Pleistocene period or Ice Age. Okay, it was spent in particular all parts. Okay, ये तो पूरे भारत में, okay, पूरे भारत में, okay, this were पूरे this were particularly on पूरे इंडिया में, okay, पूरे इंडिया में स्प्रेड था एक्सेप्ट इन द अलुवियल प्लेन ऑफ इंडस एंड गंगास. ओके, एंड पैलोलिथिक मेंस बिलोंग्स टू, दे वेर बिलोंग्स टू नेग्रिटो रेस. ओके, अगर पूछा जाए पैलोलिथिक जो लोग थे उनका रेस क्या था, दे वेर नेग्रिटो रेस, दे वेर ऑफ नेग्रिटो रेस. ओके, एंड लिव्ड इन द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स. ओके, गुफाओं में और पत्थर के जो आसियाना होते थे उसमें रहते थे ये लोग. एंड दे वेर फूड गैदरिंग पीपल. Okay, who live hunting and gathering were the main occupation of Paleolithic people. And they and जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि पेलोलिथिक लोग जो हैं वो फूड इकट्ठा करते हैं और शिकार करके खाते हैं. ओके, बिकॉज दे हैड नो नॉलेज, ऑफ एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी की कोई उन्हें जानकारी नहीं थी. ओके, घर कैसे बनता है ये भी जानकारी नहीं थी. पोट्री एनी मेटल, और नहीं कोई धातु के बारे में पता था, न ही कोई एक पोट्री के बारे में पता था, न ही हाउस बिल्डिंग के बारे में पता था. सो दे वेर, इसलिए वो लोग फूड गैदरर्स और हंटर्स थे. ओके, इन लेटर स्टेज, ओके, in later period, in later stages of Paleolithic age, they attained the knowledge of fire. Okay, and men during this period used tools of unpolished or undressed and rough stones. Okay, क्योंकि उन लोगों के पास कोई और वेपन्स नहीं था, इसलिए वो लोग रफ और अनपॉलिश्ड टूल्स का इस्तेमाल करते थे खुद की बचाव के लिए. ओके, क्योंकि स्टोन एज ही है तो उससे में स्टोन ही मिलता था. ठीक, और मेनली hand axes, cleavers, these were the, or boreans blades, these were the tools of Paleolithic people. Okay, since the stones were made of hard rocks, और ये सब जो stones सब थे ये hard rocks के बने रहते थे. Okay, hard rocks, और hard rocks को हम कहते थे quartzite. Okay, quartzite इसलिए पैलोलिथिक मेन को भी क्वार्जाइट मेन इन इंडिया भी कहा जाता है, क्वार्जाइट मेन भी कहा जाता है. ओके, okay, so based on the nature of stone tools used, Paleolithic further divided into three category based on the tools used. Okay, they first is lower Paleolithic age. Okay, so they used hand axes, choppers and cleavers mainly for chopping, digging and skinning. In middle Paleolithic age, they use stone tools made up of flakes. Okay, or this middle Paleolithic age is also known as flake culture. Okay, and later Paleolithic age, this is parallel sided blades. Okay, both side blades like burins, and some instance of bone tools also used in later or upper Paleolithic age. Okay, and lower Paleolithic age found in Sohan River Valley, now in Pakistan, Kashmir, Thar Desert. Okay, and rock shelters of Bhimbetka in MP and Velan Valley of Mirzapur in UP. These were the these were where sites of lower Paleolithic has been found. Okay, and middle Paleolithic found in Narmada and Tungabhadra river valleys. Okay, and Potwar Plateau between Indus and river Jhelum. Okay, as far as the upper Paleolithic sites are concerned, they are found in Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, central MP and southern UP and Chota Nagpur Plateau. Okay, see bone tools found only at concave sites of Kurnool. Okay, सिर्फ कुरनूल में ही बोन टूल्स मिला. ओके, एंड मुछत्ला चिंतामणि गावी इन आंध्र प्रदेश.
See, early Paleolithic age, as far as the concern, this is from 5 lakh BC to 50,000 BCE. Okay, this covers the greater part of Ice Age. सी हमने तो पढ़ा था पैलोलिथिक आइस एज में प्लेस्टोसिन पीरियड में स्टार्ट हुआ था. सो पैलोलिथिक वेयर द लार्जर रीजन रीन विच consist of ice age. Okay, and middle paleolithic age, that is from 50,000 to 40,000 BCE. Okay, established only in 1950 by H.D. Sankalpa and was renamed as Nivasan industry. Okay, after the Nivasa of Maharashtra. Okay, later Paleolithic age, that is 40,000 BCE to 10,000 BCE, where Homo sapiens first appeared at the end of this phase. See, Homo sapiens का शुरुआत हुआ था पहले Homo habilis. Okay, Homo habilis के स्टार्ट हुआ था. उस समय माइंड डेवलप स्टार्ट हुआ था, वेयर द इनिशिएशन ऑफ माइंड where the initiation of development of mind started. ओके, होमो हैबिलिस स्टार्ट हुआ था. होमो हैबिलिस से आगे फिर होमो इरेक्टस आया. ओके, होमो होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस. ये होमो हैबिलिस जो थे ये वॉक बाय दी हैंड, हाथ के बदौलत चलते थे. और होमो इरेक्टस जो थे थोड़ा सा इरेक्ट हुए. इरेक्टस मीन्स थोड़ा सा स्ट्रेट हुए. ओके, आफ्टर होमो इरेक्टस, ओके, होमो सैपियंस आए. ओके, होमो सैपियंस, दिस वर वाइस मैन. ओके, वाइस मैन, यहाँ ब्रेन का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका था एज फार एज दिस आर कंसर्न. ओके, और फ्रॉम दिस होमो सैपियंस से ही फुल फ्लेज्ड आवर एंसेस्टर्स हैज बीन डेवलप्ड. ओके, होमो सैपियंस होमो सैपियंस सैपियंस का इवॉल्व हुआ था होमो सैपियंस से ही. ओके, ऐसे करके इवॉल्व हुआ. ओके, ओके, देन आफ्टर पैलोलिथिक दिस इज मिसोलिथिक एज. ओके, उसमें भी हंटर्स और फूड गैदरर्स थे. यहाँ एक पोस्ट आगे बढ़ा, दैट इज हर्डर्स. ओके, हंटर्स एंड हर्डर्स, और उसमें हंटर्स थे और फूड गैदरर्स थे. और मेसोलिथिक एज रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द पैलोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर. ओके, दिस इज द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टोन एज. ओके, और ये इसका जो कल्चर था बिलोंग्स टू होलोसीन एरा. ओके, वी सक्सीड द प्लिस्टोसिन एरा. ओके, प्लिस्टोसिन, पहले तो प्लिस्टोसिन एरा आया. ओके, एंड प्लिस्टोसिन एरा में पैलियोलिथिक कल्चर था. ओके, और this period were replaced by Holocene era, and this Paleolithic were replaced by Mesolithic age. Okay, and Mesolithic man lives on hunting of fish, food gathering in later stage. See, जैसे वहाँ later stage में then जैसे Paleolithic age में, later Paleolithic age में they attain the knowledge of fire. They similarly in this later similarly in later Mesolithic age they also domesticated some animals. Okay, one key aspect of Mesolithic age was the reduction in size of well established tool types. And this domestication of animals were seen in Adamgarh in MP and Bagor in Rajasthan. Okay, and some other aspect of Mesolithic age are pottery is absent. Okay, pottery is absent in most Mesolithic site, but it's present at Langnaj in Gujarat and Kaimur region of Mirzapur. The last phase of this is so the beginning of plant cultivation. Okay,
लास्ट फेज, मेसोलिथिक का लास्ट फेज तो था, दैट इस दैट सो एज द बिगिनिंग ऑफ प्लांट कल्टीवेशन स्टार्ट हो चुका था। ओके, और मेसोलिथिक इनिशिएटेड रॉक आर्ट, और मेसोलिथिक जो पीरियड था, दिस स्टार्टेड पेंटिंग। ओके, इनिशिएटेड रॉक आर्ट, पत्थर का आर्ट स्टार्ट हो गया था। ओके, सो इन 1867 द फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया डिस्कवर्ड। ओके, इन 1867 फर्स्ट रॉक पेंटिंग इन इंडिया वर डिस्कवर्ड एट सुहागी घाट, कैमूर हिल्स ऑफ यूपी। सुहागी घाट में सबसे पहला रॉक आर्ट मिला। ओके, एंड नाउ ओवर 150 मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। 150 से भी ओवर 150 से भी ज्यादा मेसोलिथिक आर्ट साइट हैव बीन फाउंड। ओके, एंड बी आउट ऑफ देम Bhimbetka caves, okay, where Bhimbetka caves, okay, Bhopal in MP, where the famous rock paintings of this age. Okay, animals dominate the scenes. Okay, इसमें जो scenes बनता था, okay, ये जब जो पेंटिंग बनता था रॉक पे, दे वेर डोमिनेटेड, ठीक है, एनिमल्स का बनता था। ओके, एनिमल्स डोमिनेट द सीन। ओके, एट मोस्ट मेसोलिथिक रॉक आर्ट साइट्स। ओके, एंड देखिए, नो स्नेक्स वेर डिपिक्टेड इन दिस मेसोलिथिक पेंटिंग्स। ये पीटी में एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग स्टेटमेंट ऑफ स्टोन एज में ऑफ मेसोलिथिक एज का। ओके, और वो वहां दिया गया था इस snakes has been depicted in Mesolithic paintings. Okay, तो ये देखिए यहाँ से no snakes are depicted in Mesolithic paintings. And some important Mesolithic sites are Pagon, Rajasthan on river Kothari is one of the largest, okay, largest and best documented Mesolithic sites in India. Okay, after that Chotanagpur Plateau, Central India. Okay, then Adamgarh in MP and Bagon in Rajasthan provide the earliest, okay, evidence for domestication of animals. सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ मिलता है? दैट इज इन आदमगढ़ इन यूपी, एंड बागोर में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है पालतू जानवरों को पालने का। ओके, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, तिरुनेलवेली एंड इन तमिलनाडु, Behranpur in West Bengal, okay, and Mahadapa in UP. These were the prominent sites. Okay, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाली बात ये है कि ये जो है, this is the important part, that is Adamgarh and Bagor. For earliest evidence of domestication has been found during Mesolithic age. ओके, हमने अभी तक पैलोलिथिक एज देखा, मेसोलिथिक एज देखा, आफ्टर दैट द लास्ट वन इज मेसोलिथिक एज, दैट इज फूड प्रोड्यूसिंग। ठीक है, फर्स्ट शुरुआत किया था मेन लोग हंटिंग्स एंड फूड गैदरिंग से। ओके, हंटिंग्स एंड फूड गैदरिंग से स्टार्ट किया था। फिर मेसोलिथिक में हंटर्स थे और हर्डर्स थे। ओके, हर्डर्स थे, एंड नाउ इन नियोलिथिक दे बिकेम food producing stage. So in North India, the Neolithic age merged around, this is 8000 to 600 BC. At some place in south and eastern India, it is at late as 1000 BC. Okay, so advent of food production. Okay, the Neolithic man cultivated land and grew fruits like corn. So they cultivated and grew fruits and corns like ragi and coarse gram. Okay, सो ही डोमेस्टिकेटेड कैटल, sheep एंड गोट्स। सो देखिए, ये डोमेस्टिकेट करते थे कैटल, sheep एंड गोट्स। he started domesticating. ओके, और ये देखिए टूल्स जो ये सब यूज करते थे, वेरी शार्प टूल्स, ओके, एंड वेरी पॉलिश्ड टूल्स। और इसका जो आकार था, पैलोलिथिक से आते आते नियोलिथिक तक आकार भी छोटा होते गया और पॉलिश्ड होते गया। ओके, and during this Neolithic age, invention of pottery देखने को मिलेगा। Okay, and this communicates first made pottery by hand. Okay, first handmade pottery was invented in during Neolithic age. Okay,
क्योंकि यहाँ दे वेर स्टार्टेड फूड प्रोड्यूसिंग, राइट, और फूड प्रोड्यूसिंग होगा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगा तो ठीक है। जब आगे चल के जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगा तो स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए होगा, सो दे इन्वेंटेड पोटरी। ओके, विद द हेल्प ऑफ व्हील्स, पोटर्स व्हील्स का भी इन्वेंशन हुआ ड्यूरिंग दिस एज। सो after that, technology has been evolved. So okay, in innovation in technology, okay, Neolithic age mein man innovated in the production of stone tools, produced implements such as polished, paint and ground stone tools. Okay, and they depends on polished stones, they depends on polished stones other than quartzite, जो हम लोग पैलोलिथिक एज में ज्यादा इस्तेमाल करते थे। पैलोलिथिक एज में क्वार्ट्जाइट टूल दिस वर रिप्लेस्ड बाय, these were replaced by polished stones. Okay, depend on होने लगा। Okay, that emergence of self sufficient village communities emerge होने लगा, and people led a more settled life। इसमें इसमें people were started life, settled life। Okay, and they lived in circular, they live in circular and rectangular houses, okay, made up of mud। किससे बना था? मिट्टी से बना हुआ घर जो सर्कुलर, गोलाकार और रेक्टेंगुलर शेप में बनता था। एंड दे ऑल्सो न्यू हाउ टू मेक बोट्स, नाव कैसे बनाना, दे विल नो हाउ टू स्पिन कॉटन एंड वूल, एंड कैसे कपड़ा बुनना, सब सीख चुके थे नियोलिथिक एज में आते आते। ओके, डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज। देखिए, यहाँ तो वहां तो साथ में रहते थे, इंटरेस्ट है, साथ में मिल के रहते थे, और जैसे जैसे आगे पीरियड बढ़ा, ओके, जैसे as we move from Paleolithic to Neolithic age, डिवीजन ऑफ लेबर होने लगा, डिवीजन ऑफ लेबर होने लगा बेस्ड ऑन सेक्स एंड एज। ओके, मेल फीमेल बंटवाना होने लगा, एज के हिसाब से लेबर लोगों का डिवीजन होने लगा। ओके ओके, सो अभी हम लोगों ने स्टोन एज खत्म किया। ओके, आफ्टर दैट चार्कोलिथिक एज आता है। ओके, और कॉपर, चार्को और कॉपर स्टोन एज। Okay, Chalcolithic age marked the emergence of use of metals along with stone. Stones और metal के साथ weapons बनता था। Okay, and the first metal to be used was copper. Okay, first metal was used to be copper. Occasionally used with bronze, और occasionally कभी कभी bronze के साथ भी mix किया जाता था। So technically the Chalcolithic stage largely applies to the settlement of pre-Harappan. Okay, but in various parts of the country it appears after the end of Bronze Harappan culture। कहीं कहीं ये हड़प्पा से पहले वाला फेज माना जाता है, और कहीं कहीं दे इवॉल्व एज दी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी कहीं कहीं चारकोलिथिक एज का एविडेंस मिला। ओके, सो टेक्निकली it is pre-Harappan, but in various parts it is appears to be at the end of Bronze culture or Harappa culture। Then some Chalcolithic cultures are contemporary to Harappa culture, okay, and some pre-Harappan cultures too, though it is possible to say that most Chalcolithic cultures are post-Harappan। Most prominent site of pre-Harappan Chalcolithic cultures are Ganeshwar near Khetri mines of Rajasthan, Kalibangam in Rajasthan, Banawali in Haryana, and Kot Dizi in Sindh, that is in Pakistan। So Chalcolithic people domesticated cows, sheep, goats। Okay, Chalcolithic people were domesticated cows, sheep, goats, pigs, and buffaloes, and hunted deer। Okay, and they ate beef. They ate beef, but did not like pork। Okay, and were also not acquainted with horse। Horse centric नहीं था, so these were not horse centric। horse के बारे में पता नहीं था। So it is rather interesting to note that domesticated animals were slaughtered for food। ठीक है, तो domesticate जो करते थे उसको वो लोग slaughter खाने के लिए, ओके, मतलब जो खाने के लिए अपना domestication of animals किया जाता था, and not milked and not milk for dairy products। dairy products के लिए इस्तेमाल नहीं, मीट के लिए पाला जाता था। ओके, and people of Chalcolithic phase produce wheat, rice। Okay, wheat, rice as their staples, bajra, several pulses like lentils, green gram, grass, and pea। Okay,
they practice more slash and burn or June cultivation. They practice slash, burn, or June cultivation. Okay, and they use different types of pottery. Black, black and red pottery were used by the Chalcolithic people. The most popular one was the black and red pottery. Okay, then other features of Chalcolithic age, they were not acquainted with burnt bricks. Burnt bricks के बारे में लोगों को नहीं पता था. Okay, and they are generally live in thatched houses made of mud bricks से ये लोग घर बनाते थे. Okay, क्योंकि ये लोग के burnt bricks के बारे में कोई आइडिया नहीं था. ओके, एंड देयर इकोनॉमी वेर बेस्ड विलेज बेस्ड इकोनॉमी था. ओके, चार्कोलिटिक एरा पीपल डिड नॉट नो द यूज ऑफ राइटिंग्स के बारे में नहीं पता था इन लोगों को. एंड द विलेजेस वेर स्मॉल बट हट्स क्लोज टू ईच अदर. ओके, पास पास में ही झोपड़ियां बना करते थे. एंड चार्कोलिटिक एज पीपल कुक देयर फूड, ये लोग खाना भी पका के खाते थे. ओके, okay, and small images, clay images of earth goddess have been found. Okay, mother goddess have been found. ये मट्टी के भी वो लोग आइडल बनाते थे, इमेजेस बनाते थे. Chalcolithic peoples were fond of ornaments and decoration. See, fond of, see, Chalcolithic people were fond of ornaments and decorations के बहुत शौकीन थे. And the women wore ornaments of shell and bone and carried finely worked combs in their hair. Okay. The bull was probably the symbol of their religion's cult. Okay, बुल को और रिलीजियस बिलीफ का कल्ट माना जाता था. ओके, द चारकोलिथिक पीपल वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ. ठीक है, पीपल वेर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स. दे न्यू द आर्ट ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग, कॉपर कैसे स्मेल्ट किया जाता है. ओके, एंड दे वर गुड स्टोन वर्कर्स एज वेल. ओके, दे स्पिनिंग और वीविंग के बारे में इन लोगों को पता था. ओके, एंड चारकोलिथिक के पीरियड में there were very high level of infant mortality. Okay, infant mortality were very high. Infant mortality described as the child number of child death per thousand. Okay, is known as infant mortality. So with high because they were there, the science were not developed that much. Okay, so one can note the beginning of social inequalities also in Chalcolithic began. Okay, social inequalities began in Chalcolithic period. Okay, and there was Inamgaon. Inamgaon. Okay, Inamgaon, where houses made up of muds. The houses were made in a circular and in rectangular form. Okay, and circular chief where the chief used to live. Okay, and the rectangular houses were for the labor classes. Okay, some other important excavated Chalcolithic sites were Ahar, they were the centers where smelting and metallurgy stone houses were. Gilin were the occasional use of burnt bricks. Okay, in the Balan Valley of Rajasthan. So Chalcolithic period were primarily rural settlement and Harappa were the urban settlement. Okay, you Harappan also known as Bronze culture or the period which dominated by the use of bronze, and this mostly Chalcolithic used copper. Okay, and Chalcolithic people use in near hilly and river areas. So attained urbanization on the basis to produce from food plains in the Indus Valley. So in PT, this is the questions were not asked from this section in PT. Mains question in 2015 only. Mesolithic rock
cut architecture of India not only reflects the cultural life of the times but also find aesthetic sense comparable to modern paintings. So critically evaluate the comment. So with this we come to the end of today's topic. So we will practice question in the upcoming videos. Okay. Till then, take care. Thank you very much for watching. Jai Hind. Signing off.